आपका क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. यस, दिस इज इन हाउ मेनी परसेंट? 4%. ओके, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 4%. ओके, फॉर द सेम थिंग क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट हमको हैंड ड्रॉप में भी आता है. हैंड ड्रॉप देते हुए हॉस्पिटल में वो कितना परसेंटेज की है? 2.5%. देन नॉर्मल स्क्रब में होते हैं 0.5% ऑफ क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एंड 70% ऑफ इथाइल अल्कोहल. ये दोनों मिक्स होती है, हमको हैंड ड्रॉप मिलता है. ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग एज अ pure chlorohexidine gluconate. How many percentage? 4%. Then antimicrobial solution we are using as a betadine. Normally we are saying betadine, the povidone iodine. How many percent we are using? 7.5% scrub solution we are using. Okay, normally we are using for the cleaning for the betadine solution. How many percent it's coming? 10%. We are for the मेजर सर्जरी सब के लिए हम यूज करते हैं betadine 10%. नॉर्मल बोन क्लीनिंग इन माइनॉरिटी we are using a 5%. Okay, then before doing anything, that is we have to check that is solution or scrub only we are using for the hand washing. Okay, now running water solution. Solution में क्या क्या देखा है हमने? Food solution और एंटीसेप्टिक एंड एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज द क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट 4%. Then antimicrobial solution betadine 7.5%. Scrub solution we are using. Okay, water solution next. Next बताइए. Normally we are starting with the tray with the tray cloth. Then we need a nail cutter and nail killer to remove the dirt from your nails. Then if anything extra nails, you have to cut shorten your nails. You have to give your nail polish. Yes. Then our nail paint whatever it may be. Okay, you have to clean. Then this is the kidney tray to collect the materials. Then think that also this is the sterile towel. Sterile towel always with your gown pants before doing your donning of your gowning. That time you will get this. Okay, this is the articles we need for the surgical hand washing. Clear? What and all articles we need? Running water, antiseptic and antimicrobial solution, sterile towel, cutter, okay, get tray container. Clear? Then now we have completed topic, purpose, then articles. Then whatever we are doing the procedure, we are following three things here: pre-preparation, procedure, and post. Okay. Some pre-wash preparation also is there. Okay. क्या क्या करना है ये हाथ धोने से पहले हम हाथ धोने से छोड़ दीजिए. अभी तो before doing your procedure, what and all you need to do? Ornaments उतारने. Okay. Ornaments उतार लेंगे. Next. Ornaments उतार दिया free wash में. Okay. Take your whatever the needed articles to the procedure side. Yes. आर्टिकल्स मिल गया, ऑर्नामेंट्स रिमूव कर दिया, मेरा नेल सब कट शॉर्टेड है, नेल पेंट वगैरह नहीं है. फाइन, माय हैंड इज रेडी. ओके, देन नेक्स्ट आपने हाथ धोने के बाद डायरेक्टली आप प्रोसीजर करने चले जाएंगे. यस, बिफोर डूइंग द डोनिंग यू आर डूइंग हैंड वॉशिंग. उसके पहले आपको वोटी ड्रेस, देन कैप, मास्क, इफ नीड गॉगल्स एंड शुगर. यू हैव टू बी गेट रेडी विद ऑल दोस थिंग्स. Okay, this is the pre-wash preparation. Pre-wash preparation में क्या करना है? Complete OT attire को follow करना है. आपको OT dress, cap, mask, goggles and shoe cover you are ready. Yes, while you are wearing your cap, एक भी बाल बाहर नहीं निकलने चाहिए. Okay, completely you are wearing your cap. Second, ready. Next, articles at the procedure side. Okay, everything is ready. Now we are ready for the procedure. Ready? Then before going to the procedure, we need to know some important points. Yes. Surgical hand wash में fingertip to elbow clean. Yes. Fingertip to elbow. Fingertip is less infected area. Elbow is the more infected area. So we are starting from the elbow, fingertip to elbow. Clear? Then always we have to maintain the elbow above the waist level. We are considering that below the waist level is the contaminator. So we have to maintain always the elbow should be above the waist level. There are two things should be there. Why we need to maintain the above waist level? Why?
बिकॉज हम हाथ धोने के बाद हमारा पानी है नेचुरली ड्राइन होना चाहिए. Okay, this is the less infected area, this is the more infected area. Less infected से more infected जा सकते हैं, more से less uninfected. इसलिए हमने always maintain the above price level. This elbow always, entire procedure, this elbow should be maintained as a 90-degree angle. Okay, always should be like that. ओके, इन बिटवीन आपको प्रोसीजर कर रहे हो, नहीं तो प्रोसीजर करने के बाद ओके आपको ब्रीच हो गया, मतलब इन्फेक्टेड एरिया को आपने टच कर लिया, क्या करना है, फिर से एंटायर प्रोसीजर को फॉलो करना है. क्लियर? हाउ मेनी मिनट्स करना है हैंड वॉश को? 3 to 8 minutes. 3 to 5 मिनट्स. ओके, 3 to 5 मिनट्स कंप्लीट सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए हम यूज़ करना है. देन एक स्टेप्स है प्रोसीजर फॉर सर्जिकल हैंड वॉश. तो बिफोर गोइंग फॉर योर प्रोसीजर यू हैव टू डू मिनिमम 3 times. ओके, ऑल द एंटायर स्टेप्स शुड बी फॉलोड फॉर द हैंड वॉशिंग मिनिमम 3 times. देन ईच स्ट्रोक palm to palm or the over the diaphragm, everything each steps should be minimum 10 strokes. Then तभी आप हाथ धोते हो, don't break your things, means only one stroke, never repeat this. Then don't shake your hands to remove the excess water, don't wipe your hand like this. Okay, you have to allow your natural drying. Okay, drying of the water. Okay, clear? What is the important point you have to keep in your mind before doing the surgical hand wash? 5 minutes. टाइमिंग है 3 to 5 मिनट करना. वेरी गुड. ईच स्ट्रोक को 10 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स मिनिमम साफ करना. वेरी गुड. फिंगर टिप्स को एल्बो करना है. एल्बो को कितना डिग्री मेंटेन होना चाहिए? 90 डिग्री मेंटेन होना चाहिए. देन एल्बो अबव द वाइस लेवल होना चाहिए. देन हाउ मच अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन यू विल टेक, मतलब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन approximately 5 ml. Okay, otherwise 3 cup, otherwise your cup of your hand. Okay, both the threes are correct. Okay, now it's everything is ready. Yes, pre-wash preparation is done. You know the important points to remember. Then we can start the procedure. Yes. एल्बो से अब कितने दूर तक क्लीन करना है? 3 to 5 सेंटीमीटर, अदरवाइज 2 inches. So I folded my shirt, then I ready with the cap, mask, goggle and shoe cover and everything. Pre-wash preparation, everything is done. Now I am going to start the procedure. First I am rinsing my hand. After rinsing my hand, I am taking soap solution. 1 full cup of soap solution I have taken. First I will apply soap all over my hand. सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में बताओ. फेज कौन सी है वो? टाइम आउट. Okay, rotatory movement I apply all the. Then I am going to follow all the steps what are done for the hand washing. First, how many strokes I want to do? Then second, okay, right over the left arm, left over the right arm. Okay, with interlace. Okay. Then same right one. Then next, palm to palm interlace. Okay, afterwards interlock with the back of the finger. Okay, interlock.
Then take vice versa. Then the entire procedure you have to maintain the